Canada, the biggest epidemiological institute. There's a study called Pure Study. Death from cancer has overtaken cardiac since 2019. So all of us sitting here will die. Will die. We have to die anyway. But the cause of death, number one is cancer. Second is, number one is cancer. Second is cardiac. Third is accident. So can we do something about that? And the field is huge. We can do a lot of things about cancer. Let me remind all of us, all of us have some, I will not say healthy, but mostly we go to hospital for becoming diseased. Common diseases are diabetes, blood pressure, thyroid and cancer. These are the common problems. But I'll say, to arise your interest in cancer, that cancer I consider is one of the best diseases to have. The reason is, diabetes cannot be prevented. You can't prevent diabetes. How can you prevent diabetes? There's no scientific way. You can't cure also diabetes. You can control diabetes. But controlling diabetes is not that easy. After all, life is not mathematics. So if somebody forces you to take two, rasgullas, you have to make 10 chakkars. So that's not life. Blood pressure, you can't prevent it. You can't cure it either. But cancer, it is 50% preventable, 50% early detectable, 50% curable. I will give the proof right now here. In our state of Punjab, have you seen any Sardarji smoking? Very few. If somebody has seen, that's 1 in 1 lakh. Do you know why they don't smoke? Like we were given tea when we came. Why do we take tea? To get a kick. People smoke to get a kick. People, after this life, and tea is a good habit, and let me tell you, it is an antioxidant, not coffee. Tea is an antioxidant. All our ingredients in our kitchen are antioxidant, haldi, lasan, piyaj, etc. But why I am telling a great state called Punjab and Sardarjis, they also want to get a kick, but they can't smoke. Because my moustache is 3 millimeters, their moustache is 7 centimeters. Moustache will get burnt. So practically they can't eat it. Religion also is a reason, but the religion is the 27th reason. Everybody wants to get it. We got a kick initially when we were offered tea. We didn't need it. But human beings, as you know, life. Number one. Number two, they can't chew tobacco. Have you seen any Sardaji taking tobacco? No. Because by taking tobacco, your mouth will become red. And that redness is stronger than the election red, election ink. You have to cut your beard. And a great religion like Sardarji, Sikhism, cutting religion, cutting beard is like cutting your neck. Why I am telling such strong words? I am a teacher. I have to give, I hope I don't cross 10 minutes because time is less. See, the question is, the message to go through is, tobacco is one of the main causes of cancer. सरदारों में ओरल कैंसर नहीं देखा मैंने पिछले 50 साल से. तो तंबाकू बंद करो. प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ मैं. नंबर 2, द सेकेंड, बहुत सारे कॉज बोलते हैं, मैं प्रूवन कॉज बता रहा हूँ. साइंटिफिक बताऊंगा तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम. आई डोंट हैव स्लाइड्स. सेकेंड, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स सिटिंग हियर. इफ आई आस्क देम that have you taken HPV vaccination? I won't ask you because it's embarrassing. 90% will say no. I addressed last week a girls' college in Delhi, and 95% told we have not taken HPV vaccination. Why? Because I don't know. Not knowing is no excuse. If you say I went to the 10th floor, I jumped, I died, I didn't know. So not knowing is no excuse. Now every day in television, newspaper is there. Do you know, a girl of the age of 9 to 26, if he has not taken vaccination, their parents are not allowed in my office. If somebody takes tobacco, they are not allowed in my office. I don't care. Girls aged 9 and 26 must take vaccination. Cervical cancer is preventable. Diabetes is not preventable. BP is not preventable. Thyroid is not preventable. What is the excuse of not taking it? I didn't know. So, because our girls, they go to school, they go to colleges, they go to offices, and you can't ensure sanitized, laboratories everywhere.
That is, this is a cancer caused by, a virus called human papilloma virus. You Google while sitting here human papilloma virus. It's all there in the, you are all young girls. So 40% cause is tobacco, 20% is virus. There are other things. People who like to make it otherwise, you see, they say pollution, they say pesticide, they are 50th, 51st cause. I mean, I'm talking what can be proven. So cancer is 50%, 60% preventable. What a great disease. You can go to my websites and all that, you can Google me, I have told extensively there, and anybody who doesn't follow this is not allowed in my office, number one. Number two, early detection. I'll just develop few basic things which can go into the brain of people, some at least 50% listen. How can you prevent diabetes? डेली ब्लड शुगर अगर लोगे अपना, पागल नहीं तो लोग बोलेंगे पागल हो गया. कैसे ब्लड, यू टेल मी साइंटिस्ट, कैसे प्रिवेंट करो? यू कांट प्रिवेंट डायबिटीज. सो डायबिटीज, आई एम नॉट saying against diabetes. Diabetes is a common disease, you can control it, but controlling is not that easy, a strict lifestyle and all that. Exercise, how many people do exercise in winter? BP, how to prevent BP? See your BP every day. If you don't have BP, you will have BP. टेंशन नहीं तो टेंशन हो जाएगा, बोले पागल हो गए, डेली बीपी देख रहे हैं. कैसे करोगे? प्रैक्टिकल बताओ. थायराइड कैसे करोगे? ब्लड दोगे. बट कैंसर, देयर आर 7 डेंजर साइंस ऑफ कैंसर. सब गूगल पे लिखा हुआ है, CAUTION. किसी का खांसी, वी जस्ट हैड डॉक्टर ज्योति टेलिंग अबाउट लंग्स. डू यू नो व्हाट इज द कॉमनेस्ट कैंसर इन इंडिया एंड दिल्ली? लंग कैंसर. Lung is one of our famous organs by which, do you know what we see when patient dies or not? We see whether it's breathing or not. कैसे देखते हैं? एक रुई लेके सामने कर देते हैं और हम लंग्स जो है स्टेथोस्कोप पे लेके देखते हैं. So lungs is one of the biggest organs, and what do you do for that? You have to see whether early diagnosis के लिए change in your ब्रीदिंग हैबिट्स. कफ हुआ क्या 15 दिन से ज्यादा? ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ हुआ क्या? कहीं से कोई गिल्टी आया क्या? इन लेडीज बिटवीन द पीरियड्स और कोई ब्लीडिंग हुआ क्या? तो इट सीम्स वेरी सिंपल, बट लोग बोलते हैं मेरा तो टंग में इतना बड़ा लीजन हो गया, मैं आया नहीं, मैंने सोचा नॉर्मल हो जाएगा. तुमने सोचा क्यों? पढ़ा लिखा हो, MA BA पास के हो, किस लिए पढ़ा है? पढ़ा लिखा हो के. शी cancer, more than 90% can be early diagnosed. We have a simple formula we teach our students, 80-20 formula. 20% cancer, I'm talking of our country, not West. 20% of cancer in India are diagnosed early, out of which 80% are cured. कौन क्योर है अभी बता दूंगा मैं. मेरा 2 लाख पेशेंट है इस कंट्री में क्योर, अभी बता दूंगा. 80% come in late stages, out of which 20% क्यों. हमें क्या करना है? 80% को 20% लाना है. केरला में ऑलरेडी 40% आ लिया, just because of education. तो it is very easy to diagnose cancer, but I am not saying all cancers are easily diagnosed. For example, pancreas cancer, अब सबने फोन लिया है आईफोन का, pancreas cancer easily diagnose नहीं हो सकता. कोई बात नहीं. अरे 70% डायग्नोस होता है, 80% उसको तो करो. पैनक्रियाज के पीछे लगे लोग बोलते, मेरे को बोलते हैं पैनक्रियाज डायग्नोस है. मैं बोले कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो, नहीं तो हमारा नौकरी खतरे में. कुछ तो हमारे लिए छोड़ दो, नहीं तो मेरे को एग्रीकल्चर करना पड़ेगा कैंसर छोड़ के. एनीवे, जो क्योर, मेरा 2 लाख पेशेंट क्योर है. कुछ पेशेंट का नाम मैं बता देता हूँ, उसके साथ फोटोग्राफ है. कुछ तो पब्लिकली नहीं ले सकते. एक तो जिन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया हमारे जो पेशेंट है, एक तो मनीषा कोइराला, एवरीबडी नोज, मेरे पास फोटो है. एंड शी इज एन एम्बेसडर. जहाँ हम बुलाते हैं फट से आ जाती है. मैं बोलता हूँ, आपको पता है आधे सुनेंगे नहीं, लेकिन वो बोलती है क्योंकि सी जे सेलिब्रिटी. लोग सुन के, हम 10,000 15,000 लोग हर कैंप में 10,000 15,000 लड़कियों को वैक्सीनेशन देते हैं. नॉट बिकॉज मैं बोलता हूँ, बिकॉज वो बोलती है. नंबर 1, मनीषा कोइराला क्योर. शी विल डाई, आई विल ऑल्सो डाई, बट शी इज नॉट गोइंग टू डाई ऑफ कैंसर. शी इज क्योर. युवराज सिंह 6 छक्के वाला, यू नो दैट, शी इज क्योर्ड. इज क्योर्ड मीन्स क्योर्ड. ये नहीं कि डायबिटीज रोज इंजेक्शन लेते रहो. किसी अगर खाना खाने जाओ कब खिलाओ तो भाई मैं इंजेक्शन ले लो, सारे परेशान. ठीक है ना. तो कैंसर इज वन ऑफ द बेस्ट डिजीज बिकॉज इट्स लाइक अ वनडे क्रिकेट मैच. आइदर यू किल द कैंसर, कैंसर किल्स यू. रिजल्ट होता है, ये नहीं कि ड्रग खट 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 करते रहो, सोल्व कर देना चाहिए. ठीक है, वो नहीं. इट्स अ वेरी गुड डिजीज.
because you can do lot of things. युवराज सिंह, राकेश रोशन, राकेश तो जानते नहीं होगा बच्चे, ऋतिक रोशन का पिताजी, he has a cancer, he is our patient, he is cured. अभी आप लोग जानते होंगे संजय दत्त, he is cured. You know उसके फैमिली में 3 कैंसर हुई, वो क्योर नहीं हुआ, लेकिन he is cured. वो तो लेना नहीं चाहता था. You must have seen his interviews. बोला मैं तो सब मर रहे, मैं मरूंगा. Then Rakesh Roshan spoke to him. अरे ले लो, with just one drug he is cured. Lung cancer is the biggest cancer amongst males, and breast cancer is the biggest cancer in females. Breast cancer को अर्ली डायग्नोज करने के लिए जस्ट बिटवीन द पीरियड्स एक बार अपना ब्रेस्ट देखना है. दैट्स ऑल. इज प्रिवेंटेबल. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू वेयर क्रीज हैज अ बिग रोल. हमारे कंट्री में जो फैसिलिटी है इट इज 0.5 पर मिलियन. कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी इंडिया में 0.5 पर मिलियन है. इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इट इज 10 पर मिलियन. US, UK 4 per million, India में 0.5 per million, and the effort which he is doing is trying to increase the facilities. And do you know हमारा incidence of cancer कितना है? Highest is in a place called Aizawl. मैं अगर पूछूंगा नॉर्थ ईस्ट में कितना स्टेट है, आधो को नहीं पता. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है the highest incidence of cancer. सब 7 सिस्टर गाते जा रहे हैं. अरे 75 से 8 हो गई. क्यों? हमें पता होना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, बट वहाँ हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कैंसर है. आइजॉल में, मिजोरम का कैपिटल में 280 पर 1 लाख. बासी करके एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, 40 पर 1 लाख. हमारा कंट्री जो है ना, इतना बढ़िया कंट्री है. इट इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. सबकी कल्चर अलग है, सबका फूड हैबिट अलग है. बारसी इज ए विलेज जहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं पीता. वेयर आइजॉल में हर 6 महीना का या 4 साल से सिगरेट पीना चालू हो जाता है. वो स्मोक्ड मीट खाते हैं, हाईएस्ट है. तो लॉट टू लर्न फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. एंड जो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप लोग सब ये मैसेज दे सकते टू 10 ऑफ यू एटलीस्ट, जैसे वी जस्ट हर्ड फ्रॉम डॉक्टर आनंद, भगवान के पास जो आपका पेशी हो वो थोड़ा प्यार से होगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर जिकिरात. Same in Malsa, Punjab.